Hello dear students of class 9th. It is my first video lecture related with second unit of physics, that is force and laws of motion. Dear students, this unit is very interesting. We are going to start this unit by the first topic named Galileo law. Galileo was a Greek philosopher. After observing so many living and non-living objects, he stated a law. According to him, in this universe, everybody wants to be remain in its original state or position always. इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी हमेशा अपने ओरिजिनल स्टेट या अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहती है. द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी डू सो इज नोन एज इनर्शिया. जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी ऐसा करती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं. द टर्म इनर्शिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गैलीलियो एंड दिस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी बॉडी. ये हर एक बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है. इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं सबके पास ये प्रॉपर्टी होती है. ही सजेस्टेड 3 मेन टाइप्स ऑफ इनर्शिया. गैलीलियो ने कहा कि इनर्शिया 3 तरह की होती है. नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नंबर 2, inertia of motion, and number 3, inertia of direction. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या आप अगर बैठे हैं तो आप ये चाहते हैं कि हमेशा बैठे रहें. जब तक कि आप कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई अपोजिंग फोर्स न लगाया जाए रुकने के लिए. या अगर कोई बॉडी एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा वो उसी डायरेक्शन में चलती चली जाएगी जब तक कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई फोर्स न लगाया जाए. इन्हीं एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद गैलीलियो सेड दैट the inherent property inertia which a body consists of are of 3 types. Number 1, inertia of rest. Number 2, inertia of motion, and number 3, inertia of direction. We are going to discuss these one by one. First we are going to discuss what is inertia of rest. Inertia of rest is that inherent property of the body. Inertia of rest is that inherent property of the body because of which body always wants to be remain at rest. ये वो प्रॉपर्टी बॉडी की है जिसकी वजह से हर बॉडी हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है. We have so many examples based on inertia of rest. फ्रूट्स किसी ट्री पर हैं, लगे हुए हैं. When we shake the tree, fruits fall down. क्यों ट्री को शेक करने पर फ्रूट्स गिर पड़े? इसीलिए गिर पड़े कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रॉपर्टी की वजह से फ्रूट्स रेस्ट पर रहना चाहते थे. हमने शेक करके फ्रूट की पोजीशन को चेंज किया. फ्रूट हमेशा अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहता था, इसलिए वो ब्रांच से अलग हो गया. सो यू कैन से व्हेन वी शेक द ट्री व्हाई फ्रूट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रॉपर्टी. If we beat any carpet, if we beat any cloth, if we produce jerk in any cloth, dust come out. जब किसी कारपेट को हम बीट करते हैं या किसी क्लॉथ को हम जब जर्क देते हैं तो उसमें से धूल बाहर निकलती है. दिस इज आल्सो द बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लॉथ और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द कारपेट आर एट रेस्ट. By beating, by giving jerk, we have
developed motion. Since these particles want to remain at rest, that is why they come out from the cloth or from the carpet. When we are sitting in the bus or car, and as bus or car moves suddenly in forward direction, our body move backward. जब हम किसी बस या कार में बैठे होते हैं और बस या कार एकदम से आगे भागती है तो हमारी बॉडी पीछे भागती है. इट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. टिल कार वॉज एट रेस्ट, माई बॉडी वॉज एट रेस्ट, वी स्टार्टेड मोशन द कार, आवर बॉडी वॉन्ट्स टू बी रिमेन एट रेस्ट, दैट इज वाई बॉडी मूव बैकवर्ड. सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स which we can explain on the basis of inertia of rest. Second is inertia of motion. It is that inherent property of the body because of which body wants to be remain in the state of motion. जो body चल रही है वो हमेशा चलती रहना चाहती है. There are also so many examples based on inertia of motion property. For example, अगर हम व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं और अगर सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस है तो जब तक हम व्हीकल पे अप्लाइड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे अपोजिंग फोर्स, व्हीकल रुकेगी नहीं. टिल वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द अपोजिंग फोर्स, वी आर नॉट इन पोजिशन टू स्टॉप द व्हीकल because vehicle was in the state of motion and vehicle wants to be remain in the state of motion because of which property? Inertia of motion. जब हम मूविंग कार में होते हैं हमारी बॉडी मोशन में होती है. सडनली जब कार को हम ब्रेक मारते हैं बॉडी आगे भागती है because by applying brake we are going to stop the car, but what our body wants, it wants to be in the state of motion, that is why body move forward. There are so many examples which we can explain on the basis of inertia of motion, dear students. When you will open the reference book you will get so many examples. Now next comes inertia of direction. Because of this inherent property every body wants to be remain in its original direction. जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है. Give some example. When we come out and if rain water is falling vertically downward, we hold the umbrella in a particular direction because we know that if direction of falling water is this one, it will not change. So in a particular direction we hold the umbrella and we move forward. When we move on the road having water, then from the, you can say, wheel of the vehicle, water particles move tangentially backward direction, not in all the direction. There are so many other properties also which we can explain on the basis of inertia of direction. Open the book, open the reference book. When I will provide the notes, then only you will see the other examples. So these are the three important inherent properties which any body consists of, whether body is living object or body is non-living object. And these three inherent property was suggested by whom? Galileo. Dear students, Galileo was not a physicist. He was a philosopher. So just by using philosophic mind, he introduced this law which is known as Galileo law. After some time of the introduction of this Galileo law, there is a very good story related with the Newton. Newton was lying under the tree in a garden. He has seen that a fruit is attached with the branch. After few time he observed that fruit starts moving in downward direction. Newton said, or Newton thought, that in the morning fruit was attached with the branch. It means fruit was following inertia of rest property. Why suddenly it starts moving downward? No one has shaken the tree. No one has thrown stone towards the fruit to fall down. No one is, you can say, no one is handling the food in downward direction or gripping the food and moving in downward direction. So why the fruit which was attached with the branch starts moving downward? And second thing, if fruit was detached from the branch, why it starts moving downward only? Why not it starts moving towards left side? Why not it starts moving towards right side? Why not it starts moving in upward direction?
Then Newton started thinking about this particular activity so many times, and finally he modified the law suggested by Newton by introducing the concept of force. The term force was introduced by Newton only. What modification Newton has done in the Galileo law? How did he define force? How we can define force? That we will share with you in my next video lecture. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.